Living in communal harmony is natural to Indians. For times immemorial, India has given wide space to its countrymen to practice diverse faiths and religions. Example of this peaceful coexistence could be seen at every nook and corner of the country. Today we take you to witness two such examples where Muslims have been contributing to the Hindu festival of Navratra. Take a look. India is a country where religious harmony and peaceful coexistence have prospered in its true spirit and have become the identity of its citizens. Examples of this harmonious bond are seen on a day-to-day basis in different regions of the country. One such example is from Godhra city of Gujarat, where Muslim artisans have been making dandiyas for Hindu festival of Navratri for years. गोधरा में मुस्लिम समाज के 80 साल से ये कामकाज चल रहा है और यहाँ के डांडिये पूरे देश और दुनिया में प्रख्यात है। जो नौरते और नवरात्रि का पर्व त्यौहार होता है तो गोधरा शहर के मुस्लिम कारीगर और दुकान वाले वो बहुत कलात्मक बनाते हैं और कौमी एकता के लिए भी वो एक बहुत बड़ी बात है गोधरा के अंदर। और इससे पूरे गोधरा के 200 से ऊपर कारीगर, दूसरे जो बनाने के जो कारखाने हैं और जो व्यापारी जो यहाँ से ले जाते बेचते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता था। About 18 inches long, dandiyas are wooden sticks made of mango or bawal wood covered with colorful laces and decorative items and are widely used in dandiya and garba dances during different festivals like Navratra. The dandiyas made in Godhra are supplied all over the country. Meanwhile, in Meerut city of Uttar Pradesh, Muslim artisans have been making effigies of Demon King Ravan that are burnt on the Hindu festival of Dussehra. 5 generations of these Muslim families have been making these effigies as a gesture of long-gone religious harmony between the two communities. भेदभाव वाली कभी बात ही नहीं हुई, ना मेरे को ऐसा आदमी मिला जो भेदभाव दिखाए। हमने सन 82 में बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था शहर के अंदर, निकलने चले की नौबत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ बैठ के काम किया है। नहीं, कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भेदभाव वाली कोई बात हो। बहुत सहयोग मिला हमें यहाँ से, लोग भी हमारा मान करते हैं और हम इनका करते हैं। India has always had many examples of how different people live together in harmony, and these Muslim artisans are one of them.